In the name of Allah, who is the master of all and who taught the knowledge by pen. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you and your loved one will be safe and sound with the grace of Allah Almighty. Today's our topic is of the summer vacations and activities about the writing essay on the importance of dictionary and the importance of the internet. We have to write one essay and let's see the question. Question number 5. Write an essay on the importance of dictionary or the importance of internet. It means we have to write one essay among these two. Let's see the first one. The importance of dictionary. First we have to know what's the definition of the dictionary and when we use, why do we use. If we see the definition of the dictionary is a listing of words in one or more specific languages. There are different types of the dictionaries. If we see a dictionary, English dictionary, in which we can see that meanings of the different words, meaning of words in one language, like the English to English dictionary, English to Urdu dictionary, English to Arabic dictionary, English to Urdu dictionary, Urdu to English dictionary, and different dictionary we can see. There are also picture dictionaries. But when we see that more specific language, okay, what do we learn in the dictionary? We improve the pronunciation of the words. We learn the better pronunciation of the word. We learn that how to say and how to pronounce the words correctly. We can see the different meanings of single words. In a dictionary, we have the list of different मीनिंग्स इवन ऑफ आ सिंगल वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड के क्या हैं, डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं. Different kinds of the dictionary that I mentioned earlier, that Urdu to English dictionary, English to Urdu dictionary, Urdu to Arabic dictionary, Urdu to English dictionary. इसका मतलब कि पिक्चर डिक्शनरी भी है, यानी कि एक लैंग्वेज में एक से ज़्यादा लैंग्वेज में भी डिक्शनरी हो सकती हैं. Like to, if we say that English dictionary in Arabic and Urdu, English dictionary in Arabic, Urdu and Farsi, we can have different kinds of the dictionary. If we open the dictionary, we can see the examples of sentences. If we want to take the example of a word and we can know how to use the words in the sentence, we can learn that with the help of example of sentences. यानी कि अगर हमने देखना है कि उस सेंटेंस को, वर्ड को किस तरह सेंटेंस में यूज़ किया है, हम इसको एग्जाम्पल सेंटेंसेस से भी हेल्प ले सकते हैं. Synonyms and antonyms of words. Yes, we can see the list of different synonyms and antonyms of single words in a dictionary. यानी कि एक वर्ड के synonyms भी और antonyms भी डिक्शनरी में मौजूद होते हैं. Yes, if we want to check the spelling, what's the correct spelling of words, we can help it from the dictionary. A source to improve vocabulary. If we want to learn new words, we have to use the dictionary, and it improves our vocabulary, it improves our learning material. Abbreviations of word, like the kilometer, when we say that km, if we see the SEC, second. Similarly, we can get know and we can get the awareness about the different abbreviations like the EG, corporation, COP, government, GOVT, different words.
categories of words, parts of speech. If we see that we want to check if a word belongs to which category. For this purpose, we have to check the and we have to take the help from the dictionary. We learn the use of words. We can learn the different use of a word if of a single word in the dictionary. हमें एक single word के different way से use करना भी हम सीखते हैं. We learn. Words are arranged alphabetically. How words are arranged? If we check the dictionary, we can see that words are arranged in a alphabetical order. यानी कि वो A से लेकर Z तक अरेंज होते हैं. यानी कि आफ्टर A, B, C in this way we can see the words in a dictionary. Reduce our mistakes. If we use a dictionary, what will happen? It means it will be improve our vocabulary, and when we use the dictionary, it will decrease our mistakes. Dear students, we can write different uses of the we can write different points about the importance of dictionary. You may try them. I try to explain some important points for writing the importance of a dictionary. You will use them and you may add more points. Okay. Next one is the importance of the internet. First, we have to know what is internet. The internet is a global system of interconnected computer networks. यानी कि इंटरनेट क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर के नेटवर्क्स क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं. Global village. With the use of global internet, the world has become global village. It means कि we can access any part of the world. We can talk to any person in any part of the world. We can get the information about the any part of the world. अगर हम यहाँ बैठे हैं हम दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो रहा है इस इंटरनेट की मदद से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. अगर किसी से बात करनी है, like we are sitting in the Pakistan and we can talk to a person in the America, we can talk to a person in the Australia, we can talk to a person in the Africa, we can talk to a person in any part of the world. Source of education. When we use the internet for the education purpose, we can get the knowledge from the internet. If we use the internet, we can get the different kinds of the education. Tool of entertainment. It means we can watch different movies, we can watch dramas, we can watch different plays, tableaus, songs, we can watch games, matches with the help of internet. Okay, in the business field we can do the dealings with the different kinds of the person. Like Sialkot is famous for sports, for business purpose, for commerce, for export purpose. वो क्या है? इसका मतलब है कि मुख्तलिफ लोगों से हम घर बैठे इंटरनेट की मदद से किसी एक जगह बैठे किसी ऑफिस में बैठकर हम दुनिया के किसी भी डिफरेंट काइंड्स के पीपल से डीलिंग कर सकते हैं, उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनसे कोई आर्डर वगैरह ले सकते हैं. Marketing of things. If we have to sell different kinds of the things, even in Pakistan, even in Asia and any other part of the world, we can take the help from the internet.
when do when people do the marketing of things, then people get the knowledge of the different kinds of the things, then we can get the knowledge how to do the ऑनलाइन शॉपिंग. हम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें बर्गर चाहिए. वी कैन बाय क्लॉथ, वॉचेस, यानी कि कोई भी चीज़ हमें ऑनलाइन वे से, इंटरनेट की मदद से मिल सकती है. वी कैन बाय, वी कैन सेल. Financial transaction, we can pay the bill even sitting in, and we can transfer the money from our accounts to another person even sitting in the office, even sitting in the home. Advanced skills learning, it means if we have to learn the new skills, advanced skills, then we can take the help from the इंटरनेट. इट मीन्स कि हमें अगर कोई नई स्किल सीखनी है, लाइक हमने अगर प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी है, हमने कोई डिज़ाइन सीखनी है, ड्राइंग अच्छी करनी है, या कोई और चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए भी हम क्या किससे हेल्प ले सकते हैं? इंटरनेट से. चेक एंड बैलेंस ऑफ थिंग्स, अगर हम इफ़ वी आर नॉट at that place, like the if we have to check the different things like the rates of the goods, rates of the different people or different kinds of the services, if we have to check the नंबर ऑफ़ वर्कर प्रेजेंट और एब्सेंट, वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट. यानी कि अगर कुछ लोग काम पर आए हैं, कुछ एब्सेंट हैं, कुछ प्रेजेंट है, कुछ एब्सेंट हैं, या कुछ चीज़ों की कीमतें हमने देखनी है कि इसका आज मार्केट में क्या रेट है, लाइक कि हम गोल्ड का चेक करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या है हेल्प ले सकते हैं. हाँ, इवन कि हम अपने ऑफिस में बैठ कर देख सकते हैं कि हमारे सिटी में क्या हो रहा है, आउट ऑफ सिटी क्या हो रहा है, प्रोविंस में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहा है. वी कैन चेक एंड बैलेंस ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. ऑनलाइन लर्निंग, हम एजुकेशन के इंटरनेट के ज़रिए हम ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, लाइक कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. यानी कि एक टीचर स्टूडेंट्स को उसके घर जाए बगैर, उसके पास जाए बगैर, या स्कूल जाए बगैर उसको ऑनलाइन टीचिंग कर सकता है. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स कैन लर्न द थिंग्स थ्रू द ऑनलाइन सोर्सेज. नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ लर्निंग मेथडोलॉजी. अगर हमने नई मेथड सीखनी है, टेक्नोलॉजी सीखनी है, यानी कि हमने डिफरेंट थिंग्स सीखने, अगर हमने MS वर्ड सीखना है, या ऑफिस सीखना है, या कोई और डिज़ाइनिंग वगैरह सीखनी है, तो उसके लिए भी हम इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं. मीन ऑफ कम्युनिकेशन, वी कैन टॉक टू पीपल ऑफ द वर्ल्ड विद द इंटरनेट, लाइक द we are using the different applications like the WhatsApp, Skype, Messenger, and so many apps that including in the category of the communication. We can take the help from them, and all these things are due to the internet. Research on different things कि हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर क्या वर्किंग हो चुकी है, व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट विल बी हैपन, व्हाट कैन बी हैपन, क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या किया जा सकता है. all these things can be learned, can be seen and can be managed with the help of the internet. Dear students, these are some points that I shared, and for your ease, and you have to be write the all these points in a proper way, in a proper order. I try to tell some points and some ideas to you,
and you have to use these points, and as well as you can use different points, and you can also add a quote for writing the quotation, for writing the essay. Take care of yourself and your loved one. Thank you. Allah Hafiz.